Good morning, children. Today we're going to start the new chapter from your grammar book, that is the pronoun and kinds of pronouns, that is chapter number 8. So let's begin. So first of all, we need to understand what is the meaning of the word pronoun. Pronoun होता क्या है? और उससे भी पहले you must know that what is a noun. So noun refers to the name of a person, place, animal or thing. So basically दुनिया में जितने भी लोग, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप उनको देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, even if you are able to touch them or not able to touch them, बट स्टिल जो चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं, एनिमल्स, प्लांट, चीज़ें, सब कुछ इस दुनिया में, एवरीथिंग इज़ अ नाउन. सो देयर आर सम वर्ड्स जिनको हम नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. सो अ pronoun इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ओके, pronoun को हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीमा इज़ माई फ्रेंड. Now, which is the noun in this sentence? We have two nouns here, Rima and friend, right? Rima is my friend. Rima मेरी दोस्त है. Rima is also a noun and friend is also a noun. Rima is a special noun and friend is a common noun. Now, in the next sentence, if I want to say something more about her, if I want to say something more about Rima, तो मैं कैसे करूँगी? She always stands first in the class. So, इस सेंटेंस में मैंने रीमा का नाम फिर से तो यूज़ नहीं किया. रीमा की जगह पे आई रोट शी. ओके, शी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास. मैं उसके बारे में कुछ और भी बताना चाहती हूँ. शी इज़ ऑल्सो अ गुड डांसर. वो एक अच्छी डांसर भी है. Right? So, in the first sentence, I said Rima. In the second and third sentences, I used she in place of Rima. So, she is a pronoun because इसको मैं Rima की जगह पे use कर रही हूँ. Right? So, those words which are used in place of a noun, वो words जो कि हम किसी noun की जगह पे use करते हैं, उनको हम pronouns कहते हैं. Just imagine, अगर मैं आपके बारे में कुछ बताऊँ, okay? I say that Sham is a very good student. Sham always stands first in the class. Sham is a good dancer. Sham is an intelligent student. Sham is my best friend. तो हर बार जब हम नेम लेंगे शाम शाम शाम, right? So it looks a bit awkward. हमें थोड़ा सा अजीब लगता है. Okay, so in place of a name, we can use pronouns he, she, it, etc. Now, moving on, we have kinds of pronouns. We must know that there are different kinds of pronouns, and according to your book, in your book, they have mentioned about personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun and possessive pronoun. आपकी बुक में हम इन 4 pronouns के बारे में बात करेंगे. Okay, in this chapter, particularly in chapter number 8, only 3 pronouns have been discussed: personal, demonstrative and interrogative pronouns. And in the next chapter, we'll also talk about possessive pronoun. But you must know कि इस chapter में सिर्फ 3 pronouns के बारे में बात होगी और possessive pronoun के बारे में हम next chapter में बात करेंगे. Alright? Now there is a rule which is very very important. Pronouns should not be followed by a noun. जो words जिनको हम pronoun कहते हैं, उनके आगे कोई भी नाउन नहीं होना चाहिए. अगर किसी वर्ड के आगे नाउन आता है तो वो प्रोनाउन हो ही नहीं सकता. दैट इज़, अ वर्ड इज़ नॉट अ प्रोनाउन इफ़ अ नाउन कम्स आफ्टर इट. एक वर्ड को हम प्रोनाउन नहीं कह सकते अगर उसके आगे नाउन है तो, बिकॉज एडजेक्टिव इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन. जब हमने chapter of adjectives किया था, right? There also I told you, for the adjective of quantity, adjective of number, possessive adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, एक condition ये था कि इन words के आगे noun होना चाहिए. Okay? So इन words के आगे noun होना चाहिए और वो words adjective बन जाते हैं, लेकिन pronouns के आगे noun नहीं होना चाहिए. Alright? तो अगर जो ये कुछ वर्ड्स हैं इनके आगे नाउन होता है, देन दे बिकम एडजेक्टिव, और ये प्रोनाउंस तभी होंगे जब इनके आगे नाउन नहीं होगा. ऑलराइट, सो प्रोनाउंस के आगे नाउन नहीं हुआ करते और एडजेक्टिव्स के बाद नाउन्स होते हैं, राइट? एंड देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी.
जो हमने रीड पहले भी किया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है वो सेंटेंस में कहीं पे भी आ सकता है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के आगे भी कोई नाउन होना चाहिए, राइट. बट फॉर दिस चैप्टर लेट्स रिमेंबर अबाउट प्रोनाउंस ओनली, दैट प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिनके आगे नाउन्स नहीं होते. इसका मतलब ये नहीं कि हर एक वर्ड प्रोनाउन हो जाएगा जिसके आगे नाउन नहीं होगा, राइट. कुछ एक वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंस हो सकते हैं अगर उनके आगे नाउन नहीं हो तो. Okay, so let's talk about personal pronouns. So this we have already discussed that there are three kinds of person: first person, second person, and third person. Okay, first person is the one who speaks. Right now I am speaking, so I am the first person. Second person is the one who listens. जो इंसान बात को सुनता है, that is the second person. And third person is the one जिसके बारे में बात की जाती है. Okay, I am the first person right now, you are the second person, and third person is the one जिसके बारे में बात की जाए. Now again we have to categorize these persons into two kinds, that is singular and plural. So first person singular is I, me, mine. जब मैं अपनी बात करूँगी तो मैं I, me, mine ये यूज़ कर सकती हूँ. जब मैं हम सब की बात करूँगी, प्लूरल की बात करूँगी, then what can I use? I can use we, us, right? Next is second person. Second person singular, right? Second person singular is you, and second person plural is also you. Third person singular he, she, it, him, her. ओके, ही, शी, इट, हिम, हर. जब हम यहाँ बैठ के किसी और के बारे में बात करेंगे, या तो वो लड़का होगा या लड़की या फिर कोई चीज़. इफ़ इट इज़ अ बॉय देन he or him can be used, and if it is a girl then we can use she or her, and if there is a thing about which we are talking about, तो चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं it. Okay, he, she, him, her, and it. And if we talk about plural, तो हम क्या बोल सकते हैं? they and them, right? So in personal pronoun we have three kinds of person: first person, second person, third person. So first person singular I, me, mine. Plural is we and us. Second person singular is you. Second person plural is you. Third person singular is he, she, it, him, her. And third person plural are they and them. Now let's take up some examples. I go to school daily. Okay, so अब इसमें हमारा pronoun क्या है? I. Second example, Raghav is my best friend. He is smart. So I just told you that pronouns वो words हो सकते हैं जिनके आगे noun नहीं हो सकता. Okay. So Raghav is my best friend. Now again you can say कि मैम इसमें my भी तो आया है, right? But आप notice करो that my के बाद best friend लिखा हुआ है. Okay, so my best friend, वो मेरा best friend है. Okay, so that is why my जो है वो pronoun नहीं होगा. Okay, then is he is smart. he इसमें क्या होगा? he is a pronoun क्योंकि he के आगे कोई भी noun नहीं है. Third example is I love this chair. It is old but strong. Now I is the first person. This is a pronoun. It is old but strong. It यहाँ पे chair के लिए यूज़ किया गया है. chair की बजाय हमने second sentence में क्या लिखा है? it. So it is the pronoun here. आप देखो कि it के आगे या I के आगे there is no noun. Number 4. My friends will come tomorrow. They are eager to meet my family. So in the first sentence if you see my friends, आप कह सकते हो कि मैम my pronoun है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो after my क्या लिखा हुआ है? friends लिखा हुआ है. So friends is a noun. That is why my जो है वो pronoun नहीं हो सकता क्योंकि my के बाद friends लिखा हुआ है. They are eager to meet my family. तो they के आगे कोई भी noun नहीं है, इसीलिए they is a pronoun. It's a personal pronoun. Rima is a great dancer. So Rima is a noun here. I am waiting to see her. अब Rima की बजाय हमने क्या यूज़ किया? her. Okay, I am waiting to see Rima की बजाय I am waiting to see her. So I is the pronoun and her is also the pronoun. So I के आगे भी कोई noun नहीं है,
हर के बाद भी कोई नाउन नहीं है, दैट इज़ वाई, क्योंकि इनको हमने कुछ लोगों के नेम को रिप्लेस करके यूज़ किया, आई और हर को, दैट इज़ वाई दे आर प्रोनाउंस। सो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इनमें होते हैं, सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, राइट, और इनके आगे आई मीन किसी भी प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं होना चाहिए। His house is big. I visited it last Monday. Now his house is big. His house, उसका house. So his house is a noun here, इसीलिए his pronoun नहीं है. I visited, I के बाद कोई भी noun नहीं है, that is why it is a pronoun. It last Monday. Okay, I visited it last Monday. तो it के बाद भी कोई noun नहीं है, that is why ये हमारा होगा pronoun. Now moving on, we have exercise number 1. Underline the personal pronouns in the following sentences. Write FP, SP and TP for first person, second person and third person in the space given. So what you have to do is you have to identify the personal pronouns in these sentences and then you have to write whether फर्स्ट पर्सन है वो, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो आप इनकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करोगे, आप लिखोगे FP, SP और TP. So let's begin. I go to school daily. So you have to identify which one is the pronoun here, which word is a pronoun. So in the first sentence, I is the pronoun जो कि मेरे खुद के नाम को रिप्लेस करके लिखा गया है. Okay, so I is a personal pronoun. Which kind of pronoun is it? It is फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ इसमें. सोहन गिव मी अ पेंसिल. सोहन अब मेरे लिए एक थर्ड पर्सन की तरह है. सोहन किसी और पर्सन का नेम है, लेकिन ये है नाउन. गिव इज अ वर्ब, अ इज एन आर्टिकल एंड पेंसिल इज अ नाउन. सो बचा गया मी. सो इन दिस सेंटेंस मी इज द पर्सनल प्रोनाउन. और मी अगेन जब मैं मी कहती हूँ तो मैं अपनी बात करती हूँ, दैट इज वाई इट इज फर्स्ट पर्सन. सो आई राइट FP. नेक्स्ट इज यू आर अ गुड बॉय. तुम एक अच्छे लड़के हो. तो तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं तुम्ही से कह रही हूँ, दैट इज वाई इट इज अ सेकेंड पर्सन. सो आई शैल राइट SP. नंबर 4, वेयर वर यू येस्टरडे बॉयज. सो इन दिस सेंटेंस कुछ लड़कों को पूछा गया है कि तुम लोग कल कहाँ थे. ओके, सो वेयर वर यू येस्टरडे बॉयज, और आपको इसने बुना है पर्सनल प्रोनाउन. सो यू इज the personal pronoun here and the type of personal pronoun is second person. He is a brave boy. वो एक बहादुर लड़का है. So personal pronoun is he and the type is third person, क्योंकि he, she, it होते हैं third persons, उनके बारे में बात की जा रही है, right? So this is the way you have to solve this exercise in your book. Moving on, we have interrogative pronoun. So interrogative pronoun means ऐसे words जो हमारी help करते हैं कि question पूछने में. Interrogation means question पूछना, कुछ inquiry करना, right? So an interrogative pronoun is used to ask questions. इसका हम इस्तेमाल करते हैं कुछ questions पूछने के लिए. For example, we use the words like what, which, who, whom, whose. Alright? Now what you need to remember is that you cannot use any noun after this word if you want to make them as a pronoun. Okay, आप इनके आगे कोई भी noun use नहीं कर सकते अगर आप इनको pronouns बनाना चाहते हो तो. Okay, so let's have the examples. First one is what is the latest news. ताज़ा खबर क्या है. So what के बाद कोई भी noun नहीं है, so it is an interrogative pronoun. Whose is this bag? किसका बैग है ये. There is no noun after whose, so whose is also an interrogative pronoun. Number 3, which of these dresses is yours? इनमें से कौन सी ड्रेस आपकी है. So which के बाद कोई भी noun नहीं है, that is why it is an interrogative pronoun. These dresses, आप कह सकते हो कि मैम these भी तो है, लेकिन these जो है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि these के बाद noun दिया हुआ है. नेक्स्ट इज whom have they appointed the captain. अब whom के बाद भी कोई भी नाउन नहीं है. whom means किसको, उन्होंने किसको कैप्टन अपॉइंट किया है. so whom is an interrogative pronoun. ओके, सो जब हम interrogative pronouns की भी बात करेंगे
आफ्टर यूजिंग दीज वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हिच, हु, हुम, whose, इनके बाद कोई भी नाउन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट remain as interrogative pronouns. Moving on, demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are used to point out at the things. जैसे कि हमने demonstrative adjective में भी किया था, this, that, these, those यूज़ किया था हमने, बट वहाँ पर हमारे nouns immediately बाद आ सकते थे. Over here, we talk about demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns में कोई भी noun इन words के आगे नहीं आना चाहिए. For example, this is my pen, that is your house, these are our dresses, those are your shoes. So if you notice that this, that, these, those, एक भी noun नहीं है इनके आगे. Noun है but after a couple of words, is my, is your, are our, are your, इनके बाद nouns दिए गए हैं. Otherwise this, that, these, those के साथ कोई भी noun नहीं है. That is why it will become demonstrative pronoun. So today we have discussed about 3 kinds of nouns, which are those: personal pronouns, interrogative pronouns, and demonstrative pronouns. What you need to remember is that personal pronouns में 3 तरह के persons होते हैं, first, second and third, right, singular and plural. And interrogative pronouns are used to ask questions. Demonstrative pronouns, they point out towards the things, right? So what is the most important thing? It is that इन words के आगे हमारे पास कोई भी नाउन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रोनाउंस नहीं रहेंगे. ये क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव्स बन जाएंगे. ओके, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1 and exercise number 3 in the book, and you have to solve the assignment which I have shared in the WhatsApp group. This assignment needs to be solved in your notebook. So आप question भी लिखेंगे notebook में, and the answer also you will write, right? So if you have any problem, just let me know. Take care of yourselves. Stay safe.